चलू हम तो ठीक छी ना. At least I am okay. Maithili-English. Author Alison Barnes. Illustrator Alison Barnes. Translated into Maithili by Gajendra Thakur. पहाड़ी बकरी उना साकुलैंड में रहै छली. साकुलैंड एकटा सुंदर देश छलै. एहि देश में समुद्रक तट, बोन, घाटी आ पहाड़ सब किछु छलै. Una, the mountain goat, lived in Sakuland. Sakuland was a wonderful country. It stretched from the source of the sea to the forests, from the valley to the mountain. जानवर सबके साकुलैंड बड्ड पसिन. खरहा आ हरिन लेल घास छलै, चिड़ै आ भालू लेल कीड़ी आ मगरमच्छ आ बनबिलाड़ लेल माछ. ओतय छलै निर्मल आ ठंडा पानि आ से सभक लेल. The animals loved Sakuland. There was grass for the rabbits and the deer, insects for the birds and the bears to snack on, and fish for the crocodiles and wild cats. There was clear, cool water for everyone. उना पहाड़ पर सबसँ उच्चगर स्थान पर रहैत छै. ऊंच नीच, धरा, पत्थरगर, नमगर आ कठिन रस्ता, आ तई ओकरा लग में दोसर जानवरक संग भेंट घाटक पल खेते नहि छलै आ ओकरा असगरे रहबाक आदत भ गेल छलै. ओकरा ई नीको लागै छलै. ओकरा जे मोन जखन मोन से क सकैत छै. कखनो काल उना के बुझाय जे दोसर सब कने बुड़बक अछि. ओकरा सबके सब चीज संगे किया करऽ पड़ैत छै. की ओ सब असगरे धारक कात नहि जा सकैत अछि. हम तऽ असगरे जाइ छी, उना सोचलक. सब जानवरक काज करबाक अलग तरीका छलै, मुदा उना के बुझाय छलै जे ओकर तरीका सबसँ नीक छै. Una lived high above the others, on top of a mountain. The climb up and down the rocky mountain trails was long and difficult. She didn't spend too much time with the other animals and got used to being alone. Heather liked it. She could do whatever she wanted, whenever she wanted. Sometimes Una thought that the others were a bit silly. Why do they always have to do everything together? Can't they go to the stream by themselves? I do, thought Una. All the animals had ways they liked to do things, but Una thought her ways were the best. आस्ते आस्ते साकुलैंडक मौसम बदलय लगलै, मुदा जानवर सब एहि पर काने बात नहि दै छल. एक दिन व्हेल सब, जे ओतुका पानि में बरखक बेसी समय बितबै छल, घोषणा केलक जे ओ सब आब दोसर ठाम जाकर रहत. Slowly, Sakuland's climate began to change, but the animals were not really paying attention. One day, the whales, who spent most of the year in Sakuland's waters, announced that they were going to live someplace else. किया? कौच सब पुछलक. एतय कते नीक तऽ सबटा अछि. एतुका पानि हमरा सब लेल आब कने बेसी गर्म भ गेल अछि, व्हेल सब बाजल. हमरा सबके कने आर उत्तर जाय पड़त, जतय कने बेसी ठंड छै. व्हेल सबके ठंडा पानि में रहनाइ पसिन छलै, मुदा साकुलैंडक पानि आब कने बेसी गर्म भ गेल छलै. कौच सब आब व्हेल सभक नीक गीत नहि सुनि सकत, मुदा ओ सब तकर बेसी मनन नहि केलक. कम से कम हम सब तऽ ठीक ठाक छी, कौच सब सोचलक. मे उना मिमियाइत अपना से कहलक. हमरा लेल कने ठंडा वा कने गरम एके रंग. ओकरा ओ सबके हमरे सन रहबाक चाही. Why? Asked the turtles. It's quite nice here. The water has become a bit too warm for us, said the whales. We will have to go further north where it's cooler. The whales like to live in cool waters, and Succulent's water was now too warm. The turtles would miss the beautiful songs sung by the whales, but they didn't think too much about it. At least I am okay, the turtles thought. Picky, muttered Una to herself. I don't mind if it's too hot or cold. They should be more like me. कनी दिन में सब जानवर व्हेल सबका बिसरि गेल. एक दिन कौच सब सेहो देश के छोड़ि विदा भेल. किया? बनबिलाड़ सब पुछलक. अहाँ सब तऽ एतऽ प्रसन्न बुझाइ छलहुँ. आब रेतक एतऽ पते नहि अछि, कौच सब बाजल.
जे समुद्र कातक रेत में अपन अंडा दै छल। उना कौच सबके जाइत देखलक आ सोचलक जे पानिक नीचाँ सँ रेत निपत्ता भेलो सँ ओकरा कोन अंतर पड़तै। कौच सबके कतऽ रही नहि रही से विचारबा लेल ओकरा सन बुझनुक हेबाक चाही। चिब्बै लेल घासक खोजब विदा भेल आ सबटा बिसरि गेल। Everyone soon forgot about the whales. But one day, the turtles started to pack up and leave. Why? Asked the wild cats. You always seemed happy here. There is hardly enough sand left for us, said the turtles, who laid their eggs on the sandy beach. Una saw the turtles leave and thought, what difference does it make to me if the sand disappears underwater? Turtles should have been smart like me when deciding where to live. Una went looking for some grass to snack on and forgot about the whole matter. तकर बाद बनविलार सब देश छोड़ि देलक कारण ओकरा सबके धार में नीक माछ भेटबे नहि करे। माछक कमी भ गेलै। कतेक कष्ट भेलै बनविलार सबके, मुदा छोड़ू कम से कम हम सब तऽ ठीक छी, हरिन सब सोचलक। उना जै धार से पानि पीबैत छल ओ ओहि दिस तक। बनविलार सब अखज तऽ होइए, मुदा हमरा सन मजबूत ओ सब नहि अछि। Then the wild cats left. They couldn't catch nice fish anymore in the stream. It had become just a trickle. The deer thought, oh, how terrible for the wild cats. But at least I am okay. Una looked over at the stream where she drank. The wild cats are pretty tough, but they must not be as tough as me. एक दिन उना एकटा नव गप देखलक। सब साल ओकर पहाड़क बर्फक गोला सन पिघलि जाइ छलै आ ओहिसँ धार पानि सँ भरि जाइ छलै। तऽ एहि बेर कम बर्फ छलै। उना के भेलै जे की जानि की छियै, भ सकैए जे आइए एना लागि रहल अछि। One day, Una noticed something strange. Every year, the snow on her mountain would melt just like an ice cube and fill up her stream. Now there was less snow. Una was not quite certain and thought maybe it just looks that way today. मुदा तकरा बाद अजीबे सन जानवर सब साकुलैंड आबऽ लगलै। सब गाय संग प्रेम सँ व्यवहार करैत छल, मुदा ई नव जानवर सब लेल धैर्य सन। ओ सब घास के धांगैत आ चिब्बैत रहल आ ओ सब रहबो करे मारते रास। But then strange animals began to come to Sakuland. Everyone tried to be friendly to the cause, but the newcomers didn't take much notice. They kept munching the grass and chewing it some more. And there were so many of them. हरिन सब घास कम भेला सँ प्रसन्न नहि छल आ घासक कमीक कारण ओकरो सबके साकुलैंड छोड़य पड़लै। ओकरा सबके देखबाक चाही जे हमरा कखनो काल की खाय पड़ैत अछि। उना सोचलक, कखनो काल तऽ पाथर परक कजरी हमरा चाटय पड़ैत अछि। ई कतेक दुखद अछि। जतेक दिन भऽ सकलै उना पहाड़ पर रहल, मुदा कहियो काल तऽ एहन होइ छलै जे ओकरा लग ने खाय लेल किछु होइ छलै नहिये पीबै लेल। The deer were not too happy when the grass began to disappear. Slowly, the deer had to go outside Sakuland to find enough of the grass they liked. They should see what I have to eat at times, thought Una. Sometimes I have to lick the lichens on rocks. Not pleasant at all. Una stayed on her mountain as long as she could, but she often found herself without enough to eat or drink. आ ओहि कठिन पहाड़ी रास्ता सँ ओकरा पहाड़ सँ नीचाँ दिस उतरैये पड़लै। ओ पहाड़ी पर किछु घास खेलक, मुदा से ओहन स्वाद वाला नहि छलै जकर ओकरा आदत छलै। ओकरा घाटी में एकटा धार भेटलै, मुदा ओहि धारक पानिक स्वाद में ओ बात कतऽ।
आब उना के बुझेले जे किया सब जानवर ओहि इलाका से चलि गेल। ई जरूरी छै जे जेहन भोजन अहाँके चाही से भेटय आ पानियो लग पास में रहय। Finally, hungry and thirsty, Una climbed down the difficult mountain path. She tested some of the grass from the hills, but it was not the kind she liked. She found a stream in a valley, but the water's taste was not as crisp as she was used to. Now Una realized why the other animals had left. It's very important to eat the food that suits you best and have water nearby. जे जानवर सबके ओ चिन्है छल ओ सब साकुलैंड एहि दुआरे छोड़लक कारण जे ओ भोजन ओकरा सबके चाही छलै से आसानी से नहि भेटै छलै, बा ओ सब धारक सुखेला से पियासल रहै लागल छल, बा ओकर सभक निवास जे गाछ में छल से दोसराक घर बनेबा लेल काटि देल गेल। उना ओकर दोस्त सबके लागै छलै जे चलू ई ओकरा सब लेल दुखद छै, मुदा ओ सब तऽ अखन धरि सुरक्षित अछि। जखन समुद्र गर्म भऽ गेलै तऽ व्हेल सब ओतयसँ सुरक्षित स्थान तकबा लेल चलि गेल। कौच, हरिन आ उना बादमे एकाएकी बुझलक जे आब ओकरो सब लेल समस्या छै। उना के आब बुझेले जे लग पास में मित्र सभक रहनाइ जरूरी छै आ आब ओ अनका सबके तकबा लेल कृत संकल्पित छल। The animals she knew had left Sakuland when they couldn't find their favorite food easily, or when they were too thirsty because the stream had slowed down to a muddy trickle, or when their home trees were cut down to build homes for others. Una and her friends thought, at least it's not me, when changes affected someone else. As the oceans become warmer, the whales left in search for a more suitable home. The turtles, the deer, and Una could not care less. But later they had to admit now it's me. Una had to admit that having friends nearby is a necessity. She was determined to go find the others. कम से कम हम तऽ अखन धरि नहि। उना ओकर संगी साथी साकुलैंड में रहै छथि आ ओ सब वएह मौसम परिवर्तनक दुष्परिणाम सहि रहल छथि जे हम सब भोगि रहल छी। मनुख सब ग्रीन हाउस गैस बड्ड जरा रहल छथि। कोयला आ तेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होइए। गाछ कटला से सेहो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होइए। फेर मीथेन जे गाय सब फार्म में छोड़ैए, तखन कार आ दोसर वाहन से नाइट्रस ऑक्साइड बाहर होइए। ई सब ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में मिज्झर होइए आ एहिसँ ग्लोबल वार्मिंग होइत अछि आ मौसम परिवर्तनक ई कारण बनैए। ई ग्रीन हाउस गैस सब वायुमंडल से बेसी गर्मी बाहर जाइए नहि दैत अछि आ ताहिसँ ध्रुव सभक बर्फ पिघलि कऽ समुद्रक पानिक स्तरके ऊँच करैए। मौसम परिवर्तनक कारणसँ जखन बोन काटल जाइत अछि ओहिसँ वायुमंडलमे कार्बन डाइऑक्साइडक मात्रा बढ़ैत अछि। जानवर सबके जंगल, ओकर सभक अपन घर छोड़ऽ पड़ैत छै आ भोजन लेल दूर जाय पड़ैत छै। किसान सब बरखाक अनियमितताक कारण ढंग से खेती नहि कऽ पबैत छथि। ओ बेसी काल बिया बाउग तऽ करैत छथि, रोपैत तऽ छथि, मुदा बरखा नहि भेने हुनकर सभक फसिल खराब भऽ जाइत छनि। मौसमक पूर्वानुमान नहि भेलाक कारण मनुख पर सेहो प्रभाव पड़ैत अछि, जेना बिद्रोह, बाढ़ि आ सूखामे लोकके अपन घर द्वार छोड़य पड़ैत छनि। At least it's not me. Una and her friends who live in Sakuland are facing climate change, just like we are. Human beings are burning more and more greenhouse gases, GHG. There is carbon dioxide from coal and oil. Carbon dioxide is also released when we cut trees. Then methane, which cows that live in farms burp out, and nitrous oxides from cars and other vehicles. These greenhouse gases are added to the atmosphere, and that is causing global warming and changing the climate. As more heat is trapped the atmosphere by the GHGs,
The ice in the poles is melting and sea levels are rising because of climate change. When forests are cut down, they add to the carbon dioxide level in the atmosphere. Animals also lose their homes, the forest, and they have to go to far off places in search of food. Farmers are not able to grow their crops properly because of erratic rainfall. Often they sow the seeds, but there is no rain and their crops fail. Imagine a world without mango or chocolate because there was no rain or too much rain and the crop failed. Unpredictable weather also affects human beings. For example, during a storms, floods, or droughts, people lose their homes. चलू हम तो ठीक छी ना. At least I am okay. Maithili-English. Author Alison Barnes. Illustrator Alison Barnes. Translated into Maithili by Gajendra Thakur.